Yashodananda Ranjana Ranjana Yashodananda Ranjana Ranjana Yamuna Tira Vanachana Yamuna Tira Vanachana Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai God, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Jayom Vishnupad Paramahams Prayivajagacharya Stotra Sata Sri Srimat His Divine Grace Abhaya Charanara Vrinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Foundacharya Jagat Guru Savior of the whole world Srila Prabhupada Ki Jai Jaya Rita Lila Pravista Om Vishnupad Paramahams Prayivajagacharya Stotra Sata Sri Srimat His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Brahmacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasa Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sri Sri Giri Radha Giridhari Ki Jai, Sri Sri Jagannath Ballade Srimati Subhadra Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai, Harinam Sankirtana Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Samavera Bhakta Vrinda Ki Jai, Nitai Shri Gaura Pramande. All glorious Sasamon devotees, all glorious Sasamon devotees, all glorious Sasamon devotees, all glory to Shri Guru and Shri Gaura.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatamridasya Jnanam Janashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuktapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahaguna Ragunastam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahaguna Dalita Sri Vishakam Vitam Sya Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvase Sasunyavani Pasachade Satarini Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Ivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasa Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum lagayate grinim yakre patamahan vande Shri Guru Dinantaranam Paramanam Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Akanda Mandalakaram Vyaptayena Characharam Tatpadam Dashitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Hare Krishna. So, we are happy to be here this morning. You happy? Today is a very auspicious day. Today is Ekadashi Vrat. And it is a day to go deeper into our spiritual life. Ekadashi means less demands for the body and more activity of the soul. So Ekadashi, we decrease our eating and we increase our chanting. So, and today also happens to be the topic on Srila Prabhupada. So, I cannot read Hindi, but I've summarized some points I wanted to discuss. So, Srila Prabhupada plays a very, very significant role in the lives of every devotee in ISKCON.
Without Srila Prabhupada establishing this movement, you and me will not be sitting here today. There is no challenge about that. There is no objection. We all know that it's only by Prabhupada's mercy that we are now chanting Hare Krishna, and we are now going to the ISKCON temple, and we are now associating with the devotees of ISKCON, and we are on our way back home, back to Godhead. So, in order to do this, Lord Krishna had to empower Srila Prabhupada. This mission of establishing Krishna consciousness in the material world in Kali Yuga is very difficult. Only those who are empowered by Krishna, they can do such extraordinary things like establishing the Hare Krishna movement in Kali Yuga. So, for Srila Prabhupada to do this special service for Krishna, Krishna empowered Srila Prabhupada. So it is said that Srila Prabhupada is the preeminent Acharya of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya of our time. Is a preeminent Vaishnava Acharya, Gaudiya Vaishnava Acharya in our time. Because Srila Prabhupada, he embarked on a very special journey, the journey of going abroad to establish Krishna consciousness. Srila Prabhupada went to America in 1965 by means of a cargo ship, Jaladut. Today, we are all traveling, but we're not traveling by ship. We want to travel by air because air is faster. 5 hours, 6 hours, maybe 11 hours, we reach our destination. Srila Prabhupada took a whole month, almost, traveling from India to America. It took almost a whole month of traveling by boat. So if we understand the austerities, the difficulties that Srila Prabhupada went through, experienced in order to travel by boat to America, and for a whole year he was struggling on his own without any finances, without any support, without any friends. Yet Prabhupada was very determined to establish this movement that today we are all enjoying Krishna consciousness.
श्रील प्रभुपाद को देख सकते हैं, वो जल जहाज की मेहनत है और हम समझ सकते हैं कि इसमें जो उन्होंने कितना तपस्या किया, कितने तकलीफ उठाए, फिर वहाँ जाने के बाद भी उनके ऐसा नहीं है बहुत अच्छे दिन में तुरंत ही देखने को प्राप्त हुए। वो वहाँ जाके 1 साल तक संघर्ष किए, लोगों से संपर्क करने की कोशिश किए, जिससे कि हमें कृष्ण महामंदिर प्राप्त कर। It is said that for several millenniums, this knowledge of Krishna consciousness was limited within the boundaries of India and locked up in Sanskrit language. The whole world was not aware of this germ of Krishna consciousness until His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, left the shores of India and went through the difficulties of traveling by cargo ship and landed in America. And for a whole year, he did not have any support. Yet Prabhupada was determined that this knowledge, this Vedic knowledge, must be made available to the whole world. And today, the whole world is resounding in the Vedic sounds. और दूसरा चीज है, और केवल मात्र संस्कृत में भी भारत के अंदर भी जिसको संस्कृत आता था वो वहाँ तक ही सीमित हो गया, उतने व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पर श्रील प्रभुपाद जी ने आके इस चीज में एकदम आंदोलन लेके आए, रेवोल्यूशन लेके आए, क्रांति लेके आए, और ये ही उसको भारत भूमि से बाहर जाके पाश्चात्य तक लेके गए। संस्कृत से उन्होंने इंग्लिश में उसका अनुवाद किए और पूरे पाश्चात्य जगत को 1 साल पूरा इसके बाद संघर्ष करके कृष्णा भावना में दूसरे को देखा। So, Srila Prabhupada's journey to the United States of America marked the revival or the renaissance or the rebirth of the Gaudiya Vaishnava tradition in the whole world. श्रील प्रभुपाद जी के पाश्चात्य जगत जाना ये इसको सूचित करता है कि गौड़ीय वैष्णव जो वहाँ जो लुप्त हो गया था, सुप्त अवस्था में था, वो वापस से पुनर्जागृत हो गया। Because of that singular effort, because of that one man, one person, one devotee of Krishna, taking the trouble to travel to a foreign land and accepting the difficulties, the trouble for a whole year, Srila Prabhupada has made this knowledge of Krishna consciousness, he has made this knowledge of bhakti available to the whole world. और ये सब चीज में एक व्यक्ति का संघर्ष है जो स्व इच्छा से अपने लिए पूरे जो ये जो बड़ा सा कार्य है उन्होंने अपने ऊपर लिया और संघर्ष करके 1 साल का उन्होंने संघर्ष करके उन्होंने इस चीज को स्थापित किया है। And now we have Bhagavad Gita, we have Srimad Bhagavatam, we have Chaitanya Charitamrita, we have Mahabharata, we have Ramayana, all translated into many, many international languages throughout the world. And these books are accepted by universities across the world as very, very important reference books as far as religion is concerned. लोगों ने स्वीकार किया और जो बहुत विश्व के जो बड़े-बड़े विद्यालय हैं उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, सामान्य ग्रंथ रूप में, एक धार्मिक ग्रंथ रूप में इसको स्वीकार किया। इस श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। So therefore, Srila Prabhupada has played a very, very crucial role, not only to the devotees of ISKCON, but to the whole world. तो श्रील प्रभुपाद जी इसलिए उन्होंने ये आध्यात्मिकतावाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और केवल मात्र ISKCON के भक्तों के नहीं, पूरे विश्व के जगत के लोगों की। When we talk of Sanatana Dharma, Srila Prabhupada is the greatest proponent of Sanatana Dharma. Srila Prabhupada made Sanatana Dharma known throughout the whole world. And Srila Prabhupada established temples where Sanatana Dharma can be practiced.
And today, the number of people who are taken to Sanatana Dharma is increasing every day. And this credit goes to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. श्रीला प्रभुपाद जी सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हैं। यहाँ तक कि जो सनातन धर्म को जानते भी नहीं थे, वहाँ श्रीला प्रभुपाद जी ने मंदिर स्थापना किया और ऐसे सनातन धर्म के को पालन करने के लिए बहुत सारे भक्त जुड़ते जा रहे हैं। रोज प्रति दिवस ऐसे जुड़ते जा रहे हैं और इसे श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से। So, for Srila Prabhupada to do this, we can look at some events in his life that point to the fact that Srila Prabhupada was empowered by Krishna. तो इस चीज को हम समझने के लिए हम ऐसी कुछ चीजों की चर्चा करते हैं जहाँ वैसे चीज को दर्शाता है कि श्रीला प्रभुपाद जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति दी है, इसके कारण ये सब चीज संभव हो पा रहा है। For somebody to do this extraordinary service, for somebody to establish such a powerful religious organization throughout the whole world, he needs empowerment. Krishna Vina Shakti. Without Krishna's empowerment, it is not possible. So, before Srila Prabhupada went to the West, he was trying to establish a devotee association in India. It's called the League of Devotees in Jhansi. Sometimes when we do something and we fail the first time, we get so discouraged, we don't want to do anything again. But Srila Prabhupada demonstrated by his life that one should never give up trying. So Srila Prabhupada wanted to establish League of Devotees in Jhansi, and he was there struggling. He made even the first disciple. He initiated somebody the first time in Jhansi. And Prabhupada was trying to establish this devotees association, but things didn't work the way he wanted. So he has to leave Jhansi. But some incident happened in Jhansi. Srila Prabhupada initiated one devotee, and on the Janmashtami, Srila Prabhupada invited people to come and join him so that they can have 24-hour kirtan on the Janmashtami night. Nobody came. Even that one disciple, he did not come. But Prabhupada did not give up. He was one man in a big hall with his mridanga. Prabhupada was running up and down the hall playing mridanga and chanting alone. Sometimes when we are doing some things, we get discouraged when people don't join us, when people don't help us, when people don't encourage us. We get discouraged and we want to give it up. But Srila Prabhupada,
On that Janmashtami night, he was alone in a big hall. He was playing the mridanga, he was chanting, he was dancing, he was running up and down the whole hall by one person. कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कई प्रचार करते हैं तो व्यक्ति हमारे प्रोग्राम में नहीं जुड़ते हैं, कभी-कभी हमें सहायता नहीं करते हैं या कभी कोई अच्छे शब्द इंस्पायरिंग शब्द उत्साह देने के लिए कभी प्रेरणा का स्रोत नहीं रहता है, पर फिर वैसी अवस्था में हम एक निरुत्साहित हो जाते हैं। पर श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे दौर से गुजरे हैं, पर श्रील प्रभुपाद जी के देखिए वो जन्माष्टमी के दिन में महत्वपूर्ण दिन में उनके कोई सहयोग नहीं आया, उनके लेक्चर्स में कोई नहीं आया, पर श्रील प्रभुपाद जी अकेले इतने उत्साहित में थे, उत्साह में थे, वो कीर्तन की कीर्तन बजा के पूरा कीर्तन करते हुए पूरे हॉल में करते रहे, केवल एक ही जन प्रभुपाद जी स्वयं। So Krishna is always watching. Krishna is always observing. Krishna is always with us. He is the super soul. Sarvasya chaham hridasanivisto matas smriti jnanam apohanam cha. Krishna is seated in our hearts, and from him comes knowledge, remembrance, and forgetfulness. Krishna is always with us, watching whatever we are doing. पर भगवान श्री कृष्ण सबको देखते हैं कि कौन सा भक्त कितना संघर्ष करता है। जैसे भगवद गीता में लिखा है सर्वस्य काम तेजस्वी विष्णु मदस्मृति ज्ञान कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा ढूंढते हैं और सब चीज देख रहे हैं और वो भक्तों के साथ में है, कोई उनके साथ में नहीं है। So as Prabhupada was dancing alone, chanting alone, playing the mridanga alone, and running up and down the hall by himself all night, Krishna was appreciating Prabhupada's kirtan. श्रील प्रभुपाद जी उस रात अकेले थे, अकेले मृदंग बजा रहे थे, अकेले गा रहे थे, अकेले नाच रहे थे, अकेले घूम रहे थे ऐसे करके, पर वो अकेले बाहर रूप से हो सकते अकेले है, पर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में। And at a point, Krishna could not contain, Krishna could not withhold his ecstasy, his joy, seeing his pure devotee single-handedly chanting his glories in the middle of the night. Krishna appeared with a very beautiful gallant and put on Prabhupada. तो श्रील प्रभुपाद जी को ऐसे भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे और भगवान श्री कृष्ण को अपने भाव को रोक नहीं पाया ऐसे, और उस रात को जब श्रील प्रभुपाद जी के लिए कीर्तन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और श्रील प्रभुपाद जी के गले में हाथ कंपन की। And Srila Prabhupada's ecstasy increased. You cannot imagine that Lord Krishna himself personally appearing to gallant Srila Prabhupada with a very special gallant. So Srila Prabhupada's ecstasy increased and he danced more. कि अगर भगवान श्री कृष्ण अगर उनके समक्ष आ जाए और उनके आके वो अपनी गले का जो निर्माल्य है वो आपको ऐसे प्रदान करे, तो श्रील प्रभुपाद जी के जो भाव है उसमें और वृद्धि हो गई और वो और नर्तन गान करने लग गए। So around 4:30 to 5, that single disciple came to the place to see what was happening to his Guru Maharaj, and he saw Prabhupada in ecstasy with a special gallant. He was dancing up and down. He was wondering what has happened to this old man that he's singing and dancing alone in such ecstasy. So he approached Prabhupada and said, Prabhupada, where do you get this gallant from? This gallant is not an ordinary gallant. Where do you get it from? And Prabhupada did not say anything. तो वहाँ देखिए श्रील प्रभुपाद जी नाच रहे, गा रहे हैं, उनके गले में दिव्य हार है, भगवान का निर्माल्य वो पहना हुआ है, तब उनके जो शिष्य वो आए, वो अचंभित हो गए, बोले श्रील प्रभुपाद जी आप इतने उत्साहित क्यों है, मतलब इतने भाव विभोर क्यों हो गए और आपके गले में जो ये हार है ये कहाँ से आया? ये ऐसा लग रहा नहीं है कि ये आम प्राप्त होने वाला कोई हार है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? श्रील प्रभुपाद जी उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। So he joined Prabhupada in the kirtan, seeing Prabhupada's ecstasy, Srila Prabhupada's joy in singing and dancing, he also joined. And then later on, again, he asked Prabhupada, I'm wondering, who gave you this gallant? Because you were here alone in the middle of the night, nobody came here. How do you get this gallant?
And Prabhupada, in a very humble way, said, Krishna gave it to me. उनके शिष्य है उन्होंने उनको पूछा था तो उन्होंने जो प्रश्न का जवाब नहीं दिया और उनके शिष्य है वो भी श्रील प्रभुपाद जी के साथ कीर्तन में जुड़ गए, नाचने में जुड़ गए और बहुत देर कीर्तन होने के बाद बहुत आनंद आया। फिर उसके बाद फिर से उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को अपना जिज्ञासा प्रकट किया कि प्रभुपाद जी आपको ये हाल कहाँ से आया। तब उन्होंने कहा बहुत ही नम्र भाव से उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने। So Srila Prabhupada, he recognized, he took note, he realized that Krishna was very happy with his kirtan. Krishna was blessing him. Krishna was empowering him. What he was doing, Krishna was very satisfied. Krishna was very happy. And therefore, that garland that he received was the beginning of the empowerment of Srila Prabhupada to spread the Harinam Sankirtan throughout the whole world. So, Srila Prabhupada के साथ जब ऐसा हुआ कि उन्होंने ये चीज़ का अनुभव किया कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण का कृपा है और भगवान मैं जो कर रहा हूँ उससे भगवान को संतुष्टि प्राप्त हो रही है, वो प्रसन्न है। इसलिए तभी वो प्रथम ऐसे अनुभव हुआ कि भगवान ने मुझे शक्ति दिया है, मैं पांचवा जगत में प्रचार कर सकता हूँ। Also, when Srila Prabhupada used to live in the Radha Damodara temple in Vrindavan, that's where he stayed and began his writing translations of his books. So Srila Prabhupada, he was very absorbed in two things in Radha Damodara temple, writing and chanting. Either he was writing or he was chanting his japa. In fact, it is said in the Radha Damodara temple, Srila Prabhupada had a very rigid program centered around writing and chanting japa. Despite the intensity of his writing program, Srila Prabhupada was chanting 64 rounds every day. 64 rounds every day he was chanting. श्रीला प्रभुपाद जी इसके बाद जब पांचवा जगह जाने से पहले उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में अपना निवास स्थान बनाया, तो वहाँ श्रीला प्रभुपाद जी रहे। वहाँ पूरे दिन का व्यस्त शेड्यूल में भी उनका जो दो मुख्य कार्य था, एक था कि जो भगवद गीता भागवतम है उसको अनुवाद करना और दूसरा है जपा करना। इतने व्यस्त शेड्यूल में भी वो 64 माला करते थे। And we should remember that the Radha Damodara temple was the meeting place of the six Goswamis of Vrindavan. That is where they used to meet to discuss philosophy, to sort out things. So Prabhupada took shelter of that place where he can connect to that strong spiritual vibration. And of course, Rupa Goswami Samadhi is also there. And Prabhupada was always praying to Rupa Goswami every day for his empowerment so that he can go to the Western world and establish Krishna consciousness. हम लोग सब जानते हैं कि जो राधा दामोदर मंदिर है, ये गोस्वामी का मंदिर है। तो यहाँ गोस्वामी के समय में सारे गोस्वामी यहाँ आके एकत्रित आके कृष्ण कथा करते थे और जो भी विषय रहता था वहाँ बैठ के वो चर्चा करते थे। और हम ये भी जानते हैं कि वहाँ गोस्वामी पाद का समाधि भी है, तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने शक्ति दिया जिससे वो पांचवा जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये जगह इसलिए चुना जिससे वो गोस्वामियों के साथ वो अपना अंदर एक संबंध बना सके, कनेक्शन बना सके। So one night, Srila Prabhupada was chanting his japa. He would make sure he would finish his 64 rounds every blessed day. So one day, he was chanting his japa late into the night, beyond 12 midnight, because he wanted to make sure he had finished his 64 rounds that day before he would take rest. So as Srila Prabhupada was chanting late in the night, beyond 12 midnight, he heard
a pack of dogs, many dogs in Vrindavan. They were barking very loudly. And then all of a sudden, the dogs, they stopped barking. And then Srila Prabhupada, he heard a very, very melodious flute music coming from the area of Vamsivat, where Krishna is eternally engaged in dancing with the gopis. Srila Prabhupada was hearing the flute of Krishna. Krishna was playing the flute to invite his dear devotees for their pastimes. And Prabhupada heard that flute that night. He heard the flute of Krishna. तो उस दिन काफी रात हो गई थी, 12-10 के चले गए थे उस समय, और वहाँ आसपास से बहुत कुत्ते भौंक रहे थे ऐसे, और श्रील प्रभुपाद जी अगर जब पर देखा कि अचानक से कुत्तों की जो भौंकने की आवाज है ना वो कम हो गई, और बहुत मधुर संगीत वाद्य और जो बांसुरी की आवाज आने लगी बंसी बजती वहाँ से, और भगवान वैसे बंसी बजा के अपने भक्तों को आमंत्रित करते हैं अपने लीलाओं में भाग लेने के लिए, और श्रील प्रभुपाद जी ने इस चीज का श्रवण किया। So again, it's like Lord Krishna was initiating Prabhupada into the mysteries of his transcendental pastimes. Just by hearing that flute, Srila Prabhupada was completely transformed. He was in bhav, he was in ecstasy. Hearing the flute of Krishna, he lost external consciousness. और जैसे ही श्रवण किया जो संगीत, तो वो एकदम भाव विभोर में आ गए और वो अपना जो बाहरी चेतना को लगे। But that was another moment that Krishna empowered Srila Prabhupada. Just as Krishna empowered Brahma in the beginning of the creation, Lord Krishna also empowered Srila Prabhupada so that he can initiate this movement, he can start this movement for the benefit of the entire human society. ये एक ऐसी घटना है जिससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद ने शक्ति का संचार किए। उसी प्रकार जैसे हम भागवत में सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को अपना शक्ति प्रदान करते हैं जिससे ये सृष्टि का सृजन कर सके। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद जी को भी ये शक्ति दिया जिससे ये ऐसे आध्यात्मिक जो इस्कॉन है इसका स्थापना कर सके। When Srila Prabhupada was on the Jaladut, on the way to America, he had a number of heart attacks. And in fact, I think he went through 3 heart attacks. And he said, if there were going to be a 4th one, he would have died in the ship. But after the 3rd heart attack, Srila Prabhupada had a dream. And in the dream, he saw Lord Sri Krishna with an open boat. And Krishna was smiling at Prabhupada, and Krishna had tied a rope to the ship, Jaladuta ship that Prabhupada was inside, and Krishna's boat was leading the Jaladuta all the way to America. मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी वेदना रही होगी वो यात्रा है। एक हार्ट अटैक में कैसा अवस्था होता है, 3 हार्ट अटैक आ चुका था। श्रील प्रभुपाद जी जानते थे अगर ये 4था हार्ट अटैक अगर वापस आ गया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। तो वो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि तीसरे हार्ट अटैक के बाद उन्होंने ये सपने में देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक जहाज में बैठे हुए हैं और वो जहाज से जलदूत तक एक रस्सी बांधा हुआ है और वो
भगवान श्री कृष्ण अपने जहाज को लेके जा रहे हैं अमेरिका की तरफ और श्रील प्रभुपाद जी के जहाज को तीसरे वो लेके जा रहे हैं। Srila Prabhupada went through crisis. Traveling by sea is not a very easy job. There is seasickness. If you have never traveled by sea, the sea smells very badly. And so it will cause you to vomit. And the vomit goes on. Anything you eat, you vomit. So, and if you have a weak heart, then the heart will attack. So Srila Prabhupada was suffering from this seasickness, and it brought on him heart attacks. And Prabhupada was thinking, this mission of spreading Krishna consciousness is going to end in this boat. It's going to end on the sea because I'm going to leave my body. Srila Prabhupada was thinking like this. But that was not Krishna's plan. Krishna's plan was for Prabhupada to go to America and establish this movement and spread Krishna consciousness throughout the whole world. So therefore, Krishna demonstrated to Srila Prabhupada that the mission that he was going to establish was his arrangement, and therefore he should not be afraid. So therefore, Krishna appeared in Prabhupada's dream with a boat, and just like Matsya Avatar drawing the boat of Satyavrata at the end of the universe, at the inundation of the universe, Krishna was drawing the boat, Jaladuta boat, all the way to America, and Prabhupada never experienced any of the heart attacks again. He landed in America very safely to establish this movement. So it was Krishna's desire, it was Krishna's wish that this movement be established by his great devotee, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. कि वहाँ से सिकनेस होता है समुद्री आप समुद्र से जब जाते हैं तो उसका जो वास रहता है ना वो सबको सहन नहीं होता है तो बार बार ऐसे उल्टी होते रहता है और अगर हार्ट आपका जो है अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको हार्ट अटैक आने का संभावना रह जाता है। श्रील प्रभुपाद जी को 3 हार्ट अटैक आ चुका तो श्रील प्रभुपाद जी ने सोच लिया कि मेरा जो सपना है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना पाश्चात्य जगत में वो सपना यही समाप्त हो जाएगा। वो उसकी अभी याद है पर भगवान श्री कृष्ण का ये योजना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का योजना था कि वो पाश्चात्य जगत जाए और उनसे श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से बहुत हजारों जनों का लाखों जनों का उद्धार हो सके, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सके। तो हम जैसे श्रीमद् भागवत में उदाहरण देखते हैं कि पूरे सृष्टि में प्रलय आ चुका था तो सत्यव्रत जी को उनके जो बड़े जहाज है उनको मार्ग दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण मत्स्य रूप में आ गए और वो मार्ग को दिखाने लगे तो खींच के लेके लगे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक छोटा सा बोर्ड लेके वहाँ प्रकट हो गए थे। उन्होंने सपने में देखा और जल को ऐसे खींचते हुए लेके जा रहे हैं कि वो इस चीज का आश्वासन देते हैं कि मैं हूँ और ये मेरा इच्छा है कि पाश्चात्य जगत में ये प्रचार हो। इससे भी समझ सकते कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ये उनका इच्छा है कि ऐसे कृष्ण भावनामृत का स्थापना हो सके। Srutakriti Prabhu, the last servant of Srila Prabhupada, write in his book, what is the difficulty? There's a book he has written. What is the difficulty? Srutakriti Prabhu says that when he was serving Srila Prabhupada in Vrindavan, one day he was outside the door of Srila Prabhupada's room, and nobody was. You are telling so very nicely, and you are covering many things at a time. So it, sometimes it's possible. I miss out something. So I should make it very brief. Okay, so I was talking about Srutakriti, the last servant of Prabhupada. उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखा व्हाट इज द डिफिकल्टी। प्रभुपाद जी ऐसे कुछ बोलते थे क्या समस्या है क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने उसके ऊपर एक बुक लिखा और ऐसे लिखा व्हाट इज द डिफिकल्टी क्या समस्या है, तो वो बता रहे अपना ही अनुभव।
So he said that one day he was behind Prabhupada's door. You know, Prabhupada is in the room and the servant is outside. And so he rings a bell. If he wants the servant to come, then he ring a bell. So Srila was outside Prabhupada's door. Nobody was in Prabhupada's room. But all of a sudden, he heard a lot of people talking in Prabhupada's room. So he's wondering, nobody has entered Prabhupada's room. Prabhupada is alone in the room. But who is inside? तो चूंकि जो जैसे सर्वेंट है वो दरवाजे के बाहर बैठे रहते हैं ऐसे और जब भी प्रभुपाद को उनकी जरूरत पड़ता तो वो बैल मारते थे तो वहाँ से चूंकि प्रभु ऐसे आ जाते थे कि प्रभुपाद की क्या जरूरत है तो बाहर बैठे हुए थे प्रभुपाद का कोई बैल नहीं बजा और अंदर कोई प्रवेश नहीं हुआ पर उन्होंने देखा कि प्रभुपाद किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं बोला ऐसे कैसे संभव होगा कि उनके अंदर कोई नहीं गया अंदर प्रवेश तो उसके प्रभुपाद जी इनके साथ बात कर रहे हैं. So, out of curiosity, he looked through the keyhole because he's outside the door, nobody has entered, but he's hearing people talking inside. So he looked through the keyhole to see who is inside. He didn't see anybody. तो उसके अंदर से वो देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी जब बात कर रहे हैं तो किसके साथ बात कर रहे हैं वो उनको नहीं दिख पा रहा कोई नहीं दिखा. So later on, when some of the senior devotees came, like Krishna, Goswami and the rest, when they came, he told them the story that I was sitting behind Prabhupada's door and I'm hearing people talking in Prabhupada's room, but there was nobody in the room of Prabhupada. But I'm afraid to ask him. If they can ask Prabhupada, who was he talking with in the room? उन्होंने विचार दिया कि मैं जो प्रभुपाद जी के निकटतम भक्त है सीनियर भक्त है तमाम तो उन्होंने उनसे जाके मन की बात कहा कि मैं कुछ पता था जो प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं और किसी बाहर वाले की बात करने की आवाज आ रही है पर जब भी मैंने देखा तो कोई नहीं दिखे अंदर तो मेरे अंदर बहुत उर्दू वाले थे जानी किसके साथ बात कर रहे थे तो क्या आप सिर्फ प्रभुपाद जी को अपनी तरफ से ये पूछ सकते हैं कि इनके साथ वार्तालाप कर रहे थे आज सुबह. So these senior devotees, they gathered courage and they went to Prabhupada and said, Prabhupada, this morning, Srila heard you discussing with some people in your room. Now he did not see anybody going in and nobody coming out. So we are wondering, who were you talking with in the room? उनके बाहर से आपको किसी दूसरे भक्तों के साथ बात करते हुए वार्तालाप करते हुए सुना और वो कह रहे कि उन्होंने ना किसी को जाते हुए देखा ना किसी को आते हुए देखा आते जाते हुए नहीं देखा तो आप किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं. So Srila Prabhupada, he kept quiet for a while and then he said, well, you want to know? I said, yes. He said, the members of the Panchatattva, the 5 members of the Panchatattva, they came and were discussing the preaching. We're planning the preaching. उन्होंने कहा मैं पंचतत्व के जो 5 सदस्य हैं पंचतत्व ये इनके साथ बैठे में प्रचार की युक्ति कर रहा है किस तरह से जो कृष्ण भावनामृत है किस तरह से प्रचार प्रसार करना है तो उनसे गाइडेंस दे रहा है. Can you imagine the greatness of Srila Prabhupada? That Sri Panchatattva, Gauranga Mahaprabhu, Nityananda, Advaita Acharya, Gadadhara Pandit, and Srivasa Pandit, they all descended in Prabhupada's room and they were discussing with Prabhupada about the preaching mission in the world. How exalted Srila Prabhupada is.
और उन अन्य भक्तों के साथ में प्रचार प्रसार का हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी का स्तर क्या है. That is our great fortune. All of us in this movement, we are so fortunate to have His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Jagat Guru as our founder Acharya. And He's given us His association every moment through this Hare Krishna movement. We should all take advantage. हम कितना भाग्यवान हैं कि हम श्रील प्रभुपाद जी के संस्था में जुड़ पाए हैं और श्रील प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं. मंदिर में आके जो भी हम उनका भागवत का दर्शन करते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं. The Chaitanya Charitamrita says, Krishna Bhakti Jarma Mula Hoy Sadhu Sangha Krishna Prem Janme. That the root cause of devotional service to Lord Krishna is to associate with advanced devotees. So let us hear more of Srila Prabhupada lectures. Let us read Srila Prabhupada's books. Let us carry Srila Prabhupada's mission to everyone, and let us appreciate the presence of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We can realize the presence of Prabhupada. By this we can realize the presence of Prabhupada. That's right. By this activity, Krishna Prabhupada will manifest His presence in our lives. Actually, Srila Prabhupada is still alive. We think Prabhupada is gone. Prabhupada is still with us. If we are serious, Prabhupada would appear before us. There is a story, this is the last word, my time is up. There is a story in Eastern Europe. A lady had bought a book, Prabhupada's book, and he read the book, and she was very interested. She wanted to go to the temple. And so she looked at the address and followed the directions. But the temple has been relocated. You know, they have left the place and they rented a new place. So she went to the old place. There was no temple. And she was very sad. So she was looking here, looking there, and all of a sudden, he saw Srila Prabhupada. He saw Prabhupada in his saffron cloth with a walking stick. And Prabhupada came to the lady and said, "Are you looking for a Hare Krishna temple?" And the lady said, "Yes." He said, "This place is no more a temple, they have moved. Go straight down to the end of the road and go right. You will see the temple." So the lady followed the instruction. He went to the temple. And when she entered the temple, he saw Prabhupada's murti on the asan. So she was confused. This is a man who instructed me outside. When did he come so fast to come and sit down here? So he paid obeisances to Prabhupada. And then he started telling the devotees, "This man, I met him." And the devotees were confused. He said, "No, Prabhupada has passed away since 1977. How do you meet him?" And the lady said, No. I met Prabhupada just 5 minutes ago, down the road. He directed me here." And the devotees were surprised. बता रहे हैं कि पूर्वी यूरोप की बात है तो वहाँ एक महिला है के शादी के बाद तो उनको कहीं से ग्रंथ प्राप्त हुआ गोपाल जी का तो उनको इतना अच्छा लगा कि जो भगवत का वाणी है उनको ऐसा लगा कि उनको मंदिर जाना चाहिए तो उन्होंने पीछे की साइड में एड्रेस रहता है लिस्ट रहता है उन्होंने देखा नजदीक में जहाँ मंदिर है तो उस जगह जाकर पहुँचे
और जाके पहुंचे तो देखे वहाँ भी मंदिर नहीं, मंदिर रिलोकेट हो चुका था, मतलब एक जगह से स्थानांतरित कर दिया गया था। तो वो ऐसे बता छोटे मोटे हमारे मंदिर का एड्रेस लिखा हुआ था। तब उनके आश्चर्य से एक वहाँ एक सत्व भगवा कपड़े में एक वृद्ध व्यक्ति हाथ में छड़ी लिए हुए ऐसे करके कहा कि इधर आओ, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम मंदिर घूम रहे हो, बोले मंदिर यहाँ से सीधा जाओ और दाहिने लो, वहाँ मंदिर यहाँ से स्थानांतरित हो चुका है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो वो वहाँ गए, वहाँ जाके मंदिर में प्रवेश किए, प्रणाम किए और प्रणाम करके उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को देखा। तो वो कहने लगे, अरे ये व्यक्ति तो मैं 5 मिनट पहले वहाँ देखा था, मेरे से पहले ये व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया? तो भक्तों को बोले कि कौन है ये, इतनी फटाफट चल गए और ये, तो बोले अरे इसको गए हुए कहीं ये हो गए, समय हो गए, दर्शक हो गए, अभी ये नहीं है। बोले नहीं, तुम लोग गलत, मैंने स्वयं 5 मिनट पहले देखा। तो इस लीला से होता है कि प्रभुपाद जी जब भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभुपाद जी प्रकट हो जाते हैं। Thank you very much, Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Jai. श्रीवास प्रभु जी का हम आभार प्रकट करेंगे, कृष्ण नाम से बोलिए, हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.